Now we will learn nerve supply of auricle. Nerve supply of auricle. Auricle or external ear, pinna. This is ear. Auricle is like this. Okay, this is called helix. Against this is the anti-helix. This is also known as helix. This is lobule. This portion is tragus, and opposite to that, this is antitragus. An elevated cartilaginous part in the middle. This is concha, and this is the root of helix or crux of helix. In between the tragus and the root of helix, there is a gap here. This is called incisura terminalis. Here is the escaphoid fossa. This is the triangular fossa. This portion is triangular fossa, and this is our external auditory meatus. Opening of external auditory meatus. Okay. Now this has got very much clinical significance, that incisura terminalis, because here is only fibrous tissue, there is no cartilage, so it is the site of choice for incision for the intraoral approach of the external or any external auditory canal surgery or mastoid surgery. We have to give incision here on the incisura terminalis because there is no cartilage, only fibrous tissue. Okay, and this tragus, this concha, this is the elevated middle part. This is also used in the depressed, in case of depressed nose. And the fat of the lobule, tragus, perichondrium, helix, all these are used for the middle ear surgery, corrective surgery for the middle ear. And composite graft of skin and cartilage of the ear at the region of tragus, lobule. This is used for the to repair the defect of ala of nose. Okay. Now coming to the nerve supply of auricle. The auricle, this has got lateral surface, and this is, suppose this is the medial surface. Okay. This is lateral surface, and here is the depression, and just opposite on the medial aspect, here is the eminence. Okay, and this is medial surface. Now most of the medial surface, this is the medial surface. If suppose this is a person, here is the ear we are seeing, and this is the ear. This is the lateral surface, facing laterally, lateral surface. And when the side of the ear, this pinna, auricle, which is facing towards the head, behind this is that is called the medial surface, and this is lateral surface. So the most of the medial surface, like this much, most of the medial surface, and the posterior part of lateral surface. This is what? This is anterior, and this is posterior. Likewise, here is the anterior, and this is posterior. So the posterior part of the lateral surface as well.
most of the medial surface and the posterior part of the lateral surface. This is supplied by greater auricular. नाम में ही है ग्रेटर, तो ये ज़्यादा भाग लेगा. और ग्रेटर गा रहा है. कोई भी आदमी गाना गाते समय कान को आगे की तरफ थोड़ा सा मोड़ लेता है. तो जो मोड़ने वाला पार्ट है, that it contains mostly the helix. This portion is helix, antihelix, okay, and as well as some part of the lobule. और जो ये मुड़ने वाला पार्ट होता है बाहर से, गाना गाते समय लोग कान को ऐसे मोड़ लेता है ताकि अच्छे से सुनाई दे. दैट पोर्शन हम लोग को ऐसे ही लिखना है, द मोस्ट ऑफ द मीडियल सरफेस एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लैटरल सरफेस. बट जस्ट टू मेमोराइज, गाना गाते समय आगे कान को मोड़ लेता है, तो गा है, गा, ग्रेटर ऑरिकुलर. तो इसीलिए दैट पोर्शन इज सप्लाई बाय द ग्रेटर ऑरिकुलर. और यहाँ आगे दिस इज द लैटरल सरफेस. कोई चीज़ भी लेना होगा तो हम लोग को छुप के दे देते हैं ऐसे. तो मीडियल सरफेस की तरफ जा रहा है ऊपर में. तो अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस, दिस इज मीडियल सरफेस. अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस इज सप्लाइड बाय द लेजर ऑसिपिटल. लेजर ऑसिपिटल, इसको हम लोग लो भी बोल सकते हैं. लो, तो कोई भी चीज़ लेना है तो पीछे से घूस जैसे देना है. तो ये घूस ले लिया, तो छुप के लिया है, तो मीडियल सरफेस में और ऊपर की तरफ है. ठीक है. सो अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस इज सप्लाइड बाय लेजर ऑसिपिटल. अब यहाँ पे दिस इज द कॉन्का. दिस पोर्शन इज कॉन्का. यहाँ पे एलिवेटेड पार्ट रहता है. तो नियर द कॉन्कल कार्टिलेज एंड द नियर द here is the external auditory meatus, concha, the scaphoid fossa, in the middle part, and as well as on the in the middle part of the lateral surface, and as well as this is concha, and opposite to that on the medial surface this is conchal eminence. Both of these supplied by the auricular branch of the vagus nerve, auricular branch of vagus nerve plus facial nerve, auricular branch of the facial nerve. And facial nerve also supply in addition, there is retroauricular groove. एकदम कान के पीछे, कान उमेठ देंगे तो यहाँ पे पीछे है, इसलिए डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं. इस जगह पे जहाँ पे जूटा होता है कान, वहाँ पे एक ग्रूव होता है. यहाँ पे एक ग्रूव है, रेट्रोऑरिकुलर ग्रूव, दैट इज सप्लाइड बाय ओनली फेशियल नर्व. ठीक है. अब यहाँ पे लैटरल सरफेस में जहाँ पे अटैच है किसी चीज़ का एड्रेस क्या लिखते हैं, एट मोहल्ला रामपुर जो भी हो, तो एट यहाँ पे सटा हुआ है. तो क्या जगह है ये, दिस इज द रूट ऑफ हेलिक्स एंड द बेस ऑफ ट्रैगस. यहाँ ये दिस इज ट्रैगस, और यहाँ पे द यू कैन से एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द this is also known as crux of helix. Crux of helix, root of helix, and the adjacent part you can say. Okay. तो ये यहाँ पे जुटा रहता है, तो एट हो गया. तो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व ऑन द लैटरल सरफेस. और मीडियल सरफेस का तो हो ही गया. यहाँ पे पूरा ये दिस इज सप्लाइड बाय द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वैगस नर्व एंड द फेशियल नर्व. And retroauricular only facial nerve. ये आगे ये most of the part of the medial surface, this is greater auricular. Upper part of the medial surface lesser occipital. गा लो. ठीक है. और lateral surface में posterior part greater auricular, और यहाँ बीच में concha के पास auricular branch of the vagus nerve plus facial nerve, और जहाँ पे जूटा होता है the root of the helix and the adjacent part, root of the crux, जो crux of helix. हाँ, ये जो हुआ adjacent part, ये तो ये सप्लाई होता है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व. तो इतने सारे नर्व सप्लाई हैं. नाउ नथिंग एल्स. थैंक यू. ग्रेटर ऑरिकुलर का रूट वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर है ना तो ज़्यादा ले रहा है, C2 C3. ठीक है. लेसर ऑसिपिटल सिर्फ C2.
हमेशा बचा के रखता है, ग्रेटर वाला लेसर को हमेशा बचा के रखता है, तो इसलिए C2 ही। C3 रहेगा तो 20 से पीछे से भाग जाएगा ना। C2 C3 ज़्यादा लिया ही, C2 हो गया। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इज द ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व। फेशियल अभैगस तो है ही, ठीक है।